Starting with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. I am Sayyid Atif, and today we will discuss about the theories and experiments related to the structure of atom. In 1805, John Dalton put forward his theory. According to him, all the matter is made up of very small indivisible particle called atom. But at the end of the 19th century, it was possible to show that atom is made up of small particle called subatomic particle. These subatomic particles are called the fundamental particle. The number of subatomic particle now known is very large, but the most important subatomic particle are proton, neutron, and electron. How these fundamental particles go to make the internal structure of atom is a fascinating story. In 1896, Thomson put forward his plum pudding theory. He postulated that atoms were solid structure of positively charged with tiny negative particle stuck inside it as like plums in pudding. In 1909, Rutherford observed the effect of alpha particle on a photographic plate coated with zinc sulfide. He proved that the plum pudding model of the atom was not correct. He observed that most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. In 1913, Moseley determined the atomic number. He proposed that atomic number of an element is equal to the number of protons in the nucleus of the atom of that element. Niels Bohr presented a new model for the structure of atom in 1913. The quantum theory of Max Planck was used as a foundation for this model. According to Bohr atomic model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of revolving electron is quantized as it revolves only in orbit of fixed energy called energy levels by him. Schrödinger in 1926 proposed electron cloud model. The charge cloud concept finds its birth from wave mechanics theory of the atom. According to this concept, there are regions where the chance of finding the electron are relatively greater. Dear student, आज के टॉपिक में हम थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक मादा छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है जिनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आखिर में ये पता चल गया था
कि एटम को मज़ीद तकसीम किया जा सकता है और एटम सब अटामिक पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। इन सब अटामिक पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। 1896 में थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्ट्रक्ट होते हैं। 1909 में रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी और उसने प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत साबित किया था। उसने प्रूव किया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। इन 1913 नील बोहर ने अपने मॉडल में ये कहा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। 1926 में श्रोडिंगर ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं। उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल पेश किया था और उसने ये कहा था कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे रीजन को ऑर्बिटल कहा जाता है। 1921 में बोहर बैरी ने लैंगमुर के इलेक्ट्रॉनिक स्कीम में मॉडिफिकेशन की थी। बोहर बैरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के मुताबिक हर ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² की मदद से मालूम किए जा सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट शेल यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और थर्ड शेल एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस स्कीम के मुताबिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे नेक्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस स्कीम के मुताबिक न्यू ऑर्बिट उस वक्त शुरू होता है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन समा जाएं।